नहीं सर, व्हाट्सएप पे भेजा मैंने आपको। गुम हो जाएगा। तो एक बार डाउनलोड कर लेना उसको, फिर नहीं होएगा। हाँ जी सर। Cos 15, the probability leap year will be 53. Limit of this equation of straight line passing through this number of subsets containing the domain of so a complex number. Then a man walked 90. The second length is 3 centimeter. What are the possible lengths of the shortest board if the third is longer than? What is greater than sine 23? Sum of infinite modulus. Let a and b two subsets in a subtens. X square plus y square. That's Hudson reasoning. Expansion both. uh, Draw the graph of step function. Very good. बहुत इजी क्वेश्चन था, आता था मेरे Hmm. को। Yeah. ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाना था। Mhm. Express the complex number. Find the expression using binomial. Case study. हाँ, Ellipse. एलिप्स। ठीक है ना, GPU समझ this. Decent पेपर है यार, है बहुत ना, इजी भी अच्छा है नहीं ना। है। डिसेंट है ना, बट प्रॉब्लम इजी नहीं है, टाइम लगता है मतलब इसको सॉल्व मीडियम, करने में। मीडियम डिफिकल्टी का है, हाँ। बहुत इजी भी अच्छा नहीं है। क्वेश्चन, तो लिमिट भी थोड़े वो इनफाइनाइट वाले दिए थे। दिख रहा है, एम एस टू। ओके। हीट इन थर्मोडायनेमिक्स, व्हाट अब इज मैंने हीट? ये सोच पता था, हीट इज उष्ण। द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड between a system and its environment because of और temperature difference, इसके अंदर heat वो flow। रहेगा एडियाबैटिक सिस्टम वगैरह। अभी आएगा सब। अच्छा। temperature difference between system and surrounding, between them, so this is your heat. So, so we have a gas and it absorbs heat, it temperature changes, n moles of gas. So जैसे एम एस थीटा होता है सॉलिड्स के लिए, वैसे इसके लिए होता है n number of moles of the gas, it's c which is the specific heat capacity, इसको बोलते हैं specific heat capacity per mole, heat capacity of the gas डेल्टा टी। into हाँ, delta ये सेम T. इक्वेशन थर्मो केमिस्ट्री में भी थी। हाँ। Same here. So there are, you can find two variants, simple. One is a gram specific heat of a gas, gram specific heat of the gas. It is the amount of heat required to raise the temperature of unit mass of the substance by unit degree. अगर मास की टर्म्स में अगर निकालना है आपको, the heat required to raise the temperature of 1 gram of the gas by 1 degree. और अगर मोलर में रखना है, एन रखना है, तो एन तो क्लियर ही है। आई थिंक द सेकंड इज, तो डिपेंड करता है न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, या तो ग्राम वाला दिया होगा, ग्राम स्पेसिफिक हीट दी होगी,
convert it into moles if you're comfortable. या गैस के अगर ग्राम्स ही दिए हैं तो इजी हो जाएगा. ग्राम specific heat, then you have molar specific heat. So molar is uh, amount of heat required to raise the temperature of 1 gram mole of the gas by a unit degree. 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, और उसका 1 मोल है, 1 ग्राम मोल. इधर था यूनिट मास 1 ग्राम. यूज होता है फॉर्मूलेज में. और तो ये दिस इज नाउ द स्पेसिफिक हीट्स. दो टाइप की स्पेसिफिक हीट्स होती हैं गैस के पास. स्पेसिफिक हीट्स ऑफ गैस. जब आप हीट सप्लाई करते हो तो क्या होता है? एनर्जी सप्लाई करते हो, राइट? तो या तो हाँ उसका वॉल्यूम गैस का चेंज हो जाता है, एक्सपैंड हो जाती है, या प्रेशर चेंज हो जाता है. और ऑब्वियसली अलोंग विद टेम्परेचर चेंज, राइट? तो बेसिकली जो अगर आप फिक्स्ड नहीं होती वैल्यू कोई, राइट? दैट 1 यूनिट मास के लिए, 1 केल्विन के लिए, इट इज नॉट फिक्स्ड. इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन. यूनिक नहीं होती. आई मीन स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस इज नॉट यूनिक. It will depend. Now, what will it, when I say it is not unique and it depends on condition. So condition can be volume and pressure actually. These two conditions decide what will be the specific heat of the gas. So for example, you have a gas and you supply it some energy, and obviously some part will get used in raising its temperature, right? And some part will be utilized in expansion of the gas. So you supply heat to a gas. So some part is used in work done and some part is getting used in delta T, which is actually, if you recall from first law, was internal energy, temperature change. तो कुछ हिस्सा टेम्परेचर चेंज में होता है और कुछ हिस्सा, अगर आपने गैस को, if for example you have a situation where the gas is uh, compressed suddenly, for example. So situation number one, sudden compression. ये कंडीशन है. एक कंडीशन में बता रहा हूं जिसमें एक स्पेसिफिक हीट निकलती है. तो सडन कंप्रेशन में क्या होगा? एंड नो हीट इज सप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड. बाहर से कोई हीट नहीं आई, राइट? सो Q इज इक्वल टू 0. कोई एक्सचेंज नहीं है हीट का, और सडन कंप्रेशन है. कंप्रेशन हुआ, आपने उसके ऊपर वर्क डन कर दिया, राइट? नाउ व्हाट हैपेंस? द टेम्परेचर of the gas, right, raises due to compression. We have suddenly compressed but not supplied any, basically you have done work. That is another way of passing on energy to a system, right? There are two ways you can pass. Heat is one way, work is another way. So you did not use heat. All you have used is you have used work to suddenly compress it. And due to that, the uh, sudden compression of the gas, right? So what will happen is the specific heat will be equal to no heat supplied, Q. Let's say its number of moles is N and delta T. Specific heat is 0.
In a scenario where you have a sudden compression and no heat supplied, so Q is zero, so specific heat comes out to be zero. Only work is being done. So, and let's talk about another scenario. Okay, so let's say you have a scenario where the gas is heated. पहले गैस को हीट करा, मतलब Q देंगे, गैस इज हीटेड। अब देखेंगे स्पेसिफिक हीट कितनी आती है, एंड इट इज अलाउड टू एक्सपैंड। सो इट इज अलाउड टू एक्सपैंड, that means the system is doing work, so positive work, right? And it is allowed to expand at a rate in such a way that the rate of uh, the rate of rise of temperature is due to heat, जो आपने heat supply करी, due to heat supplied, now you're using Q, uh, the rate of rise of temperature due to heat supplied is equal to rate of, क्योंकि expand हो रही है गैस, okay? ठंडी हो रही है, if it expands it loses temperature, compression से it gains, right? When we suddenly compressed and now we are supplying heat but we are also allowing it to expand, so the rate of temperature rise due to heat supplied is equal to rate of temperature fall, गिर रहा है temperature due to expansion, ड्यू टू एक्सपेंशन। दोनों बराबर है रेट, ऐसे हम इसको कर रहे हैं। तो C इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय, Q तो आपने यूज दिया है, एक्सपैंड भी करने दे रहे हो उसको, इनटू डेल्टा टी। डेल्टा टी नहीं हो पा रहा, देर इज नो चेंज बिकॉज द रेट एट विच यू आर increasing its temperature because of supply of heat is equal to rate at which it loses temperature because of expansion. So your delta T is actually zero. And therefore, your C comes out to be infinity. So if there is an infinite specific heat being referred to, or zero specific heat being referred to, these situations should be clear in your mind that a gas which is suddenly compressed, the temperature goes up due to compression, but no heat is supplied. Specific heat is zero. Gas is heated and is allowed to expand at a rate uh, where the raise of temperature is equal to rate of temperature fall. Delta T is not allowed in this case. Then it is infinity. The specific heat is said to be infinite. That means you need infinite amount of heat to raise the temperature of the gas by 1 degree. इतनी heat चाहिए। और ये एक्चुअली इंडिकेट करता है कि विदाउट चेंज इन heat, you can increase the temperature of a gas by 1 degree or 1 gram mole or 1 gram. I mean physical significance है जीरो और infinity का, जीरो एनर्जी चाहिए या इनफाइनाइट एनर्जी चाहिए। तो दो अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग स्पेसिफिक हीट आई, लेकिन जो पॉपुलर हैं, जो विच आर यूज्ड प्रीटी ऑफन, बट दीज आर आल्सो डेफिनेशंस शुड बी क्लियर। इनफाइनाइट वाला भी पता होना चाहिए। नाउ इफ यू allow the gas to expand slowly, okay, so it expands very slowly, and so the fall in temperature on account of expansion, the fall in temperature due to this expansion, slow expansion, okay, slow expansion is small now, would be small, would be in fact smaller than the gain in temperature, smaller than the rise in temperature, ठीक। ठीक है, of the gas, heat is supplied due to ये तो heat बुझी। supplied, तो Q है due to heat supplied. So you're supplying heat, टेम्परेचर रेस कर रहे हो, एक्सपैंड कर रहे हो, लेकिन होले होले कर रहे हो, तो बेसिकली डेल्टा टी हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, फॉल जो है वो कैन न्यूट्रलाइज हो जाएगा हीट गेन गेन से। हीट गेन से द रेट एट विच द टेम्परेचर इंक्रीजेस इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर, स्लो एक्सपेंशन है।
ऐसे केस के अंदर क्या होगा, देयर विल बी नेट राइज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस, टेम्परेचर ऑफ द गैस. So delta T will be positive. If you write C for it, you will write C to be Q, supply करी थी, but you maintained a rate of increase to be greater than the rate of decrease, and therefore you were able to achieve a delta T, and therefore now you get a positive value of the specific heat. Some value comes up, but it is positive. And then generally you will see zero and infinity यूज होते नहीं है, बट कई बार अकस्मात वो दे देते हैं क्वेश्चन के अंदर. इनफाइनाइट स्पेसिफिक हीट implies which case. इनफाइनाइट का याद होना चाहिए that the rate at which the temperature increases is equal to rate at which it falls due to expansion, and heat is gas is heated. यहाँ भी गैस हीट हुई है लेकिन रेट में फर्क कर दिया है. यहाँ पे नो हीट इज सप्लाइड, बाकी दोनों में हीट सप्लाई करी है, और यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ गया है, राइट, ड्यू टू कंप्रेशन. मतलब रेट फॉल का तो अरेंजमेंट ही नहीं है, सीधा कंप्रेशन का केस है, आपने ऊपर से करा है, तो वर्क डन ने टेम्परेचर बढ़ा दिया बेसिकली. लेट्स टॉक अबाउट अनदर केस, फोर्थ. So let's say the gas is expanded. Now the gas is expanded very fast, right? That means the fall of the gas, fall of the temperature, fall of the temperature of the gas due to expansion would be greater than the rise of the temperature. So the work being done by the system makes its temperature go down, whereas the heat supplied makes its temperature go up. So rise of the temperature due to heat supplied. This is another case, just reverse of, I think, the above case. Now delta T is coming out to be negative. नेगेटिव हो गया ना डेल्टा टी, हाँ फॉल जी. जल्दी जल्दी हो रहा है. So you are actually cooling down your gas. If a gas is getting cooled down in a process rather than heating up, then the specific heat, which is Q and delta T is negative now, and therefore C comes out to be negative. So you can have four scenarios where the gas behaves in different manner. So whenever you talk about specific heat of a gas, it is not unique. It depends on what situation and condition is being referred to. Right? All right. So generally what happens is, ये तो definition के लिए बहुत अच्छा है to understand the physics of specific heat. But जो numericals में use होती है specific heat, वो होती हैं जो ये वाले केस ऐसे thermodynamics में होते नहीं ज्यादातर, जीरो, इन्फिनिटी, पॉजिटिव, नेगेटिव. जो एक्चुअल केसेस यूज होते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जो होते हैं, जो रियल प्रोसेसेस हैं, दिस इज गुड टू नो इन्फॉर्मेशन. थोड़ा सा मतलब एब्स्ट्रैक्ट है, बट द गुड टू नो इन्फॉर्मेशन इज दिस, यू नो, गुड टू नो इन्फॉर्मेशन इज if you have a specific heat, one more variety but real, of a gas at constant volume. ये बहुत रियल है, इसको सीवी बोलते हैं बेसिकली, राइट. सो कीप द वॉल्यूम सेम एंड सप्लाइड सम हीट, and what you notice is that Q is equal to N into CV into delta T. So the process is isochoric. वॉल्यूम नहीं बढ़ने देंगे, नीचे से हीट सप्लाई कर देंगे. पिक अप अ गैस, put it in a cylinder and supply it a heat Q. Don't allow the volume to go up. The complete heat, since there is no expansion, volume is not there, no work is done, PdV. So dV is zero. So work done is equal to zero, whatever is the process. And then
all heat, which is the energy, gets utilized to increase the internal energy. So N into CV into delta T. This is one. So you will see numericals where you have constant volume clearly called out. बाकी जो हमने चार्ज पढ़े थे वो basically nature of specific heat समझाने के लिए है, right? So this is equal to U actually. If you use CV, you actually end up finding the internal energy of the change of the gas, internal energy change of the gas. So I will call it delta U. Now let's talk about specific heat of a gas at constant pressure. Sorry, so you don't know what is degree of freedom. Kinetic theory पढ़ा नहीं है. Okay, specific heat of a gas at constant pressure. This is another important case. The pressure is constant, the volume is being allowed to go up. So therefore, Q is proportional to number of moles. Yes, जितना ज्यादा क्वांटिटी होगी उस पर डिपेंडेंट होगा. और तो Q बेसिकली इसके अंदर आ जाता है. Q इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, द हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द गैस. तो ये आ जाता है N इंटू सी पी इंटू डेल्टा टी, बिकॉज नाउ व्हाट यू केप्ट इज इट्स आइसोबारिक, राइट. इसमें डिफरेंस ये है कि ये इज दिस ऑल्सो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी? नो, इट इज नॉट. It in fact is a combination of two things. One, it is used for if you know Q is equal to delta U plus W. So delta U part comes from NCV dt. Okay. So you will use first law of thermodynamics, but now you will start expressing Q in terms of specific heats. So जैसे मैंने delta U को NCV dt लिख दिया न्यूमेरिकल में, Q को मैं लिख दूंगा NCP dt. So so if you do a process at constant pressure, a part of it goes into increasing the internal energy, NCV dt. So ये बन जाएगा NCV dt. So is equal to NCV dt. A part of it will get utilized for increasing and a part of it will go for increase in its work done. Right? So अगर दोनों साइड देखें तो P delta V is basically NR delta T. So NCP delta T is equal to NCV delta T plus NR delta T. Delta T is common, N is common, goes. So CP is equal to CV plus R. This relationship is a very good relationship. It tells you that the difference of specific heats at constant pressure and constant volume remains same. It is equal to universal gas constant always. Is equal to fixed. And you can also make out that Cp is greater than Cr. Because while you do constant pressure, work is also done. So आपने टेम्परेचर उतना ही अगर गेन कर लिया जितना आपने कांस्टेंट वॉल्यूम में करा था, तो एक आपका जो ये क्यू है टोटल, एक हिस्सा डेल्टा यू में यूज हो गया और एक हिस्सा वर्क डन में यूज हो गया. सो सीपी इज ग्रेटर देन सी आर बाय अ क्वांटिटी आर. ठीक है. ठीक है. You will still use first law of thermodynamics to solve questions, but now they will give you questions in terms of CP and CV also. That is the only difference that comes in. और कोई फर्क नहीं आने वाला इसके अंदर. Nothing changes for you. You have not read that ना. कैसे करें? वापस आना पड़ेगा हमें. I think you don't understand degrees of freedom. काइनेटिक एनर्जी तो अब थ्योरी गैस करना इसलिए पहले इंपॉर्टेंट रहता है कि वी डू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस. एनीवे, वापस आना पड़ेगा तो आना पड़ेगा, क्या करें. ऑल राइट, नाउ different processes, different processes in
law of thermodynamics. Okay. So now you already know Charles law. V1 by T1 is equal to V2 by T2. ठीक है, उसका इंडिकेटर डायग्राम भी बन जाएगा. So we are talking about what? We're talking about an isobaric process. P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 by T2. isobaric है तो ये कट गया. तो V1 by T1 is equal to V2 by T2. And this is P versus V. This is the line, and this is the indicator diagram showing it's a constant pressure scenario. Okay, and if you draw P versus V for this, ये बन गया. If you draw, this is expansion and this is compression. This is what it shows. Volume decrease. ये isobaric process है. और now, what do we study when we say different processes? किसी भी अब isobaric process के अंदर क्वेश्चन नहीं उठता है. अच्छा तो pressure is constant. What happens to temperature? So one quantity which you study during this process is what is the impact on pressure, temperature, sorry. Second thing you study is what happens to delta U. What delta U को क्या फर्क पड़ता है? Then you study what happens to volume. Then you study what happens to work, because work and volume actually are closely linked. And then you study the heat. किसी भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में यही चीजें हमने पढ़नी होती हैं. अब प्रेशर कांस्टेंट हो गया, इसको स्टडी करने का कोई फायदा नहीं है. If you do isobaric heating, okay, which means you uh, heat and keep the pressure constant, your delta temperature will increase. Your temperature will increase, right? Which means your delta U will be, so delta U will be increasing, will be positive or increasing. टेम्परेचर बढ़ेगा और आइसोबारिक है, प्रेशर सेम रखना है. वॉल्यूम इंक्रीज होगा. यू आर heating it, so part of the energy will go to increase the temperature and part of the energy will be used to increase the volume, which actually means a part of the energy will get to W. Work done भी positive ही हो जाएगा. Work done is positive. Gas will expand. And what happens to heat? Heat is, it's isobaric, so NCP dt is the heat which you supply. So heat is being supplied into the system because we are isobarically heating it. So, and what happens if you do isobaric cooling? Questions भी यही होते हैं सारे. Obviously there are equations to help you out, but क्वेश्चन सारे यही घूम फिर के यही आते हैं जी. वो डेल्टा यू को क्या हो गया, कैसे निकालोगे, वर्क डन कितना होगा, प्रोसेस का नाम लिखा होगा. तो आइसोबारिक कूलिंग आप ठंडा कर रहे हो, आप टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो. टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो, अगर टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हो तो डेल्टा यू भी डिक्रीज कर रहे हो. मॉलिक्यूल लेवल के ऊपर मॉलिक्यूल्स विल नॉट वाइब्रेट, राइट. एंड इफ यू आर डूइंग आइसोबारिक कूलिंग, then what happens to the work done? Sorry, what happens to the volume? Decreases. सिकुड़ रहा है. अगर सिकुड़ रहा है तो work done is also negative. And the heat is being taken. The heat is being heat is being taken outside of the system, right? NCP dt जो होगा नेगेटिव आएगा क्योंकि the heat is being taken outside of system. Right? How do you find? तो किसी ने बोला okay, tell me how will you find the work done? You said work done is very standard. Work done is PdV and volume is changing from V1 to V2. P is constant, so I will keep P out. Volume is V1 to V2. dV is equal to P V V1 to V2 is equal to P V2 minus V. मेरा आ गया. Now solve and apply the first law of thermodynamics. So like Q is equal to delta U plus W, and Q
in this case we have already seen will be ncp delta t, ncp delta t. Okay, delta u will be ncv dt, and work done we have just found out to be nr dt. ये p dv है, जो कि p1 v1 is equal to nr t1, and p will remain same, p is equal to nr t2. If you do subtract these two, you will get this nr dt, subtracting 1 and 2. So this whole thing p v2 minus v1 subtract करने पे राइट साइड पे nr t1 minus nr t2, so ये आ गया. So you have applied the isobaric में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. यू जस्ट फोकस्ड ऑन, ओके, कि वर्क डन कैसे निकलेगा जी, वर्क डन ऐसे निकलता है आइसोबारिक में. अच्छा, वो सब्स्टिट्यूट कर दिया, वो आया P1 V2 में. फिर आपने वो आइडियल गैस इक्वेशन से P1 V1 और P2 V2 को dt में ले आए, सारा कन्वर्ट कर लिया. सो मतलब हर प्रोसेस के अंदर यू विल हैव टू सी, किसी प्रोसेस में आइसोथर्मल है. अब आइसोथर्मल में टेम्परेचर तो चेंज ही नहीं होता, तो हाउ विल यू डू डेल्टा यू? देयर इज नो डेल्टा यू इन द केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, बिकॉज टेम्परेचर ही नहीं बदला मॉलिक्यूलर लेवल पे, मॉलिक्यूल को एनर्जी नहीं मिली, तो आइसोथर्मल में डेल्टा यू जीरो हो जाएगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाने में. सो हर हर प्रोसेस के ऊपर लगाना ये है, बट अपने अपने प्रोसेस के की कैरेक्टरिस्टिक होंगे कि डेल्टा यू को क्या होगा, वर्क डन कैसे निकलेगा. रूल यही, सब रूल ये फॉलो करेंगे. राइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट आइसोकोरिक प्रोसेस. Isocoric process. Isocoric process is very straightforward, right? You have to keep the volume constant. The PV diagram, which is the most famous one, volume is same. वॉल्यूम सेम रख के प्रेशर बढ़ा दिया जी, तो हो गई है, इंडिकेटर डायग्राम बना लिया. दूसरे में कि आपने क्या करा, आपने उसको प्रेशर उसका घटा दिया P वर्सेस V के अंदर. सो दिस इज रिडक्शन इन प्रेशर, दिस इज इंक्रीज इन प्रेशर, वॉल्यूम इज सेम. राइट, ठीक नाउ है. व्हाट हैपेंस, अगेन द सेम क्वेश्चन विल राइज. अच्छा जी, अगर आप आइसोकोरिक कूलिंग करोगे और आइसोकोरिक हीटिंग करोगे, क्या होगा फिर? राइट, सो यू हैव टू ड्रॉ चार्ट एंड से ओके, इट इज अ केस ऑफ आइसोकोरिक heating, and then there is something called as isocoric cooling, and then you will study all the parameters. You will say T को क्या होगा, डेल्टा यू को क्या होगा जी. मेरे अब वॉल्यूम नहीं पढ़ना, प्रेशर पढ़ना है, क्योंकि वॉल्यूम तो फिक्स्ड हो गया. अब हीट, हीट तो सप्लाई, हीटिंग कर रहे हैं, तो इन सबको हीटिंग से क्या फर्क पड़ता है, राइट? अब इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो हीट सप्लाई जो होगी वो NCV/dt होगी, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जो स्पेसिफिक हीट होगी वो dt वाली होगी. तो ये हीट सप्लाई कर दिया आपने इसको. अगर आपने हीट सप्लाई करी तो T तो बढ़ेगा, इंक्रीज. अगर T बढ़ेगा तो डेल्टा यू इंक्रीज. वॉल्यूम आपने कांस्टेंट रखा, तो वर्क डन तो होने से रहा. प्रेशर को क्या होगा आपके, प्रेशर जो है इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीजेस. इफ यू सप्लाई हीट टू इट, द प्रेशर विल इंक्रीज. या. और कूलिंग का भी बना लो फिर चार्ट, कूलिंग करोगे तो, सो नाउ यू विल टेक अवे हीट फ्रॉम इट, so T will go down, decrease. कूलिंग की बात कर रहा हूं मैं. डेल्टा यू डिक्रीज, प्रेशर डिक्रीज, वर्क डन तो होने से रहा. दिस हीट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सिस्टम, ले ली उससे तो. लेकिन ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे था, तो यहाँ हीट का फॉर्मूला NCV/dt रखा. बस इस यही चीजों का ख्याल रखना है हमने. जो थोड़े से ये तो आसान वाले प्रोसेस होते हैं, जो थोड़े से डिफरेंट टाइप के प्रोसेस हैं, राइट? जैसे कि ये आपका, अब इस पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं, राइट? सो लेट्स अप्लाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ये आप पहले वर्क डन निकाल लेते हैं. वैसे तो वर्क डन क्या निकालेंगे, जीरो तो आ ही गया. अगर मैं आइसोकोरिक की बात कर रहा हूँ, तो वर्क डन इज PdV, माई वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग, सो दिस इज P0 = 0. वर्क डन तो निकल गया. अब बात करते हैं सिर्फ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाओ, तो बोला ठीक है, Q = डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. प्रोसेस अलग है सिर्फ, तो क्यू को तो NCV/dt लिख दिया, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है. और जो आपका वर्क डन है वो जीरो है, और वर्क डन जीरो है. और आपका जो डेल्टा यू है
वो सेम ही है, डेल्टा यू. ऑल द हीट गॉट यूटिलाइज टू इंक्रीज डेल्टा यू. आंसर. हम्म. आइसोबारिक प्रोसेस के अंदर ऐसे निकाल लिया हमने. नाउ लेट्स टॉक अबाउट, ये तो इजी होते हैं बड़े हैंडल करने में. व्हाट इज ऑफ इंटरेस्ट आर टू प्रोसेसेस व्हिच आर वेरी important. One is isothermal process. ओके. आइसोथर्मल. आइसोथर्मल का मतलब होगा कि आपका ये P है, ये T, ये V है, इंडिकेटर डायग्राम. सो आपने एक टेम्परेचर पे एक्सपेरिमेंट करा, यू केप्ट इट लाइक दैट. Then you did another experiment, you kept the temperature same, and then you did another and you kept the temperature constant. So you can draw multiple graphs, T3, T2, T1, and T1 is less than T2 is less than. So if you notice Boyle's law, where T is constant, P1 V1 is equal to P2 V2. So you do Boyle's law at 300 Kelvin, then 350 Kelvin, then 450. So you'll find the graph look identical. The only thing is ऊपर होता जाता है जैसे जैसे टेम्परेचर जो है कम होता है, नीचे की तरफ होता है, फिर टेम्परेचर ऊपर की तरफ चला गया. दैट्स ओनली डिफरेंस बिटवीन देम, राइट. So the indi so this is a rectangular hyperbola, just for your knowledge, because P is inversely proportional to 1 by V. So this is an example of rectangular hyperbola. The graph is a ये rectangular रेक्टेंगुलर क्यों, ये हाइपरबोला ही तो है ये. है. हाइपरबोला ही तो है, ये हाँ, रेक्टेंगुलर कहाँ से है? वर्ड पूरा यही होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. अच्छा. ये रेक्टेंगल की शेप में नहीं है ना, ऐसे नहीं है ना? हाँ, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बट अच्छा. ओके. नाउ लेट अस सी. डोंट गो बाय द मतलब हाइपरबोला इज लाइक दिस ना? jargon. हाँ. हाँ, ठीक है, मिलता जुलता ही है. हाँ. क्वाइट क्लोज टू हाइपरबोला. नो. आइसोथर्मल प्रोसेस होता गया, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. पहली बात, द कंटेनर विच यू यूज, द गैस कंटेनर विच यू यूज, ओके, इट इज परफेक्टली कंडक्टिंग. आने भी देगा फ्रीली और जाने भी देगा एनर्जी. ठीक है जी. ठीक सेकेंड, द प्रोसेस ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन शुड बी वेरी स्लो. कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन should be so slow that it should allow for exchange of heat. एडियाबैटिक प्रोसेसेस जो होते हैं ना, उनमें टाइम नहीं होता. देयर इज नो टाइम टू एक्सचेंज हीट. दे हैपन वेरी फास्ट. एडिया जब आएंगे पढ़ेंगे उसके बारे में. सो दीज आर टू conditions to create a isothermal process, right? So essential conditions for isothermal. इंडिकेटर डायग्राम हमने बना ही लिया. इक्वेशन ऑफ स्टेट भी हमने देख ली इसकी. दिस इज इट्स इक्वेशन ऑफ स्टेट. द रूल इट obeys. Equation of state. Obviously, we have not studied the thermodynamic parameters like work done and all that. But ठीक है, अगर another important property of these curves or indicator diagrams of isothermal, which are rectangular hyperbola, PV, is a slope. A slope tangent to the point. ये tangent भी पढ़ते हैं हम इसकी. Slope of the. So if you were given इसमें PV is equal to constant, so take a derivative of both the sides. P dV plus V dP is equal to 0, and therefore dP upon dV is equal to minus P by V. The slope of a curve. So at any point, if you want to find the rate at which the pressure changes, obviously we have used calculus, so tan theta, right? So this is the slope of the tangent theta. Tan theta आ जाएगा उससे. Now let's talk about. So ये तो हो गया हमारा पुराने वाला.
the state equation and all that. Now what happens to the work done? So the work done is given by PdV. The PdV, your volume is some quantity. So either V2. So this is dx upon x, which is log x, by the way. Okay. ठीक. If we just solve it, what we will get is this is equal to nRT log of V2 minus log of V1 is equal to nRT log of V2 upon V1. So this is your final volume. This is your initial. And this curve is known as isotherm. The graph which is drawn like this, ये जो होता है, इसका नाम होता है isotherm. ये भी बोलते हैं इसको an isotherm. तो ग्राफ का नाम है isothermal process के अंदर. You can notice if the volume goes up from the equation, if the V final is greater, the work done will be positive. Log of a bigger number divided by a smaller number. So, but if it is reverse, compression, work will be negative. What happens to specific heat? Okay. Specific heat यूनिक क्यों है इसकी? Because हमने वो infinity वाला केस पहले ही पढ़ा था, इसलिए एक बार और दोबारा पढ़ लेते हैं. Delta T is equal to 0. So C is equal to Q upon M delta T is equal to Q upon M into 0 is equal to infinity. In an isothermal process, the specific heat is infinite. Let's apply first law of thermodynamics to this. So first law of thermodynamics लगाते हैं इसके ऊपर. Thermodynamics. Q is equal to delta U plus W. Delta U तो होना ही नहीं वाला क्योंकि there is no dt available to you. So Q is equal to work done. इस केस के अंदर, that is whatever heat you supply gets converted into work done, and there is no change in the internal energy of the system. Any doubts in your mind? No. Simple. Clear. कुछ भी नहीं है. मतलब ये एक्सप्रेशन याद होना चाहिए. You have to memorize this. ये nRT सेम log चीज of. थर्मोकेमिस्ट्री में भी थी. अच्छा थी. ओके. हाँ. 2.303 हाँ वही nRT है, ये वही 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 है V वही है. final upon V initial. Exactly. That is what it is. It is exactly that. हाँ जी. Just going to the next page क्योंकि ये ना लिखने में थोड़ा खराब होता जा रहा है. Okay, let's talk about adiabatic process. Okay. So when a system, thermodynamic system undergoes a change in such a way that there is no exchange of heat, Heat. yeah, between system and surrounding. सर जी. सर Yes, जो sir. हम जो थर्मोस यूज करते हैं हाँ. इसमें पानी गर्म रहता है वो क्या एडियाबैटिक होती है? हाँ, एडियाबैटिक वॉल है वो. ठीक है. Thermos as an instrument is a adiabatic wall ठीक है. between system and surrounding, and मतलब perfect insulation होनी चाहिए. एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जो कंटेनर है, इट शुड बी इंसुलेटेड. बोथ कंटेनर एंड पिस्टन should be insulated. सेकेंड कंडीशन एडियाबैटिक के लिए है कि जो कंप्रेशन और एक्सपेंशन है, इट शुड बी सडन.
compression and expansion should be sudden. That means there should be no time for exchange of heat between the system and its surrounding. Very important. क्वेश्चन में लिखा होता है छुपा हुआ. The expansion is sudden. It's a hint to you. It's an adiabatic process. Adiabatic process का सबसे बड़ा hint है ये. Sudden expansion and sudden compression. Okay. Now let's talk about what happens to P, V, etc., and all that, right? So let's say du plus dw is going to be zero because you have no heat entering, nothing is going to happen. And du is ncv dt always, plus dw is equal to zero. And dw is ncv dt plus pdv is equal to zero. And now we know PV is equal to nRT also, right? So if you substitute the values here, what you will get is PdV is equal to, take derivative अगर ले लोगे तो ये आ जाएगा PdV is plus PV is equal to nRT का डेरिवेटिव PdV plus VdP is equal to nRDT. ये आ जाएगा हमारा डेरिवेटिव जो आएगा. सो NDT ये थोड़ा सा यू डोंट नो काइनेटिक थ्योरी तो थोड़ा सा मुश्किल होगा बट चलेगा. एन डी टी इज इक्वल टू 1/r एंड पी डी वी प्लस वी डी पी. अच्छा. पीवी कुछ तो एनआरटी तो आइडियल गैस इक्वेशन है. हाँ, उसी हाँ, का डेरिवेटिव ले लिया. अच्छा. टेकिंग डेरिवेटिव, ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है. एडियाबैटिक में क्यू तो होता ही नहीं ना, तो क्यू जीरो डाला है. हाँ. और डी यू का फॉर्मूला ये होता है, वर्क डन का होता है पीडीवी. और फिर आ गए आइडियल गैस इक्वेशन के ऊपर, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी डाल दिया वैल्यू. और आगे एन डी टी इज इक्वल टू सो एंड सो. अब ये वैल्यू जो है ओके. एन डी टी इज इक्वल टू 1/r, इसके अंदर व्हाट वी डू इज वी पुट द वैल्यू ऑफ एन डी टी टू बी इक्वल टू हाउ मच, पी डी वी. ठीक है. एन सी वी डी डब्ल्यू इज पी डी वी, एन सी वी डी टी पी वी इज इक्वल टू. तो यहाँ तक एक एक, एक सॉल्व करके यहाँ तक लाए थे 1, और इसका डेरिवेटिव लेके पी डी वी प्लस वी डी पी 2. और ये सेकेंड इक्वेशन है. हमारे पास दो इक्वेशन हो गए, राइट? एक आई है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, एक आई है इसके डेरिवेटिव से. द डेरिवेटिव ऑफ आइडियल गैस इक्वेशन. अब इसके अंदर क्या करते हैं, वी सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. ये जो हमारी एन और डी टी दिख रहा है यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, एन और डी टी. एन और डी टी की जो वैल्यू है वो बेसिकली कितनी आएगी, एन और डी टी की वैल्यू जो होगी, एन डी टी विल बी इक्वल टू माइनस पी डी वी अपॉन सी वी. यही होगी ना फर्स्ट से. यस. हाँ. या कह लो कि मल्टीप्लाई बोथ द साइड्स बाय सी वी. तो दिस विल बिकम माइनस पी डी वी इज इक्वल टू सी वी बाय आर पी डी वी प्लस वी डी पी. ये आ गया हमारा.
या इसको इस तरफ ले जाता हूँ फिर तो बन जाएगा पी डी वी प्लस सी वी बाई आर, पी डी वी प्लस वी डी पी इज इक्वल टू। मेयर रिलेशनशिप आता है, पढ़ा है? क्या सर? क्या? मेयर्स रिलेशनशिप मेयर रिलेशनशिप? नहीं पता होगा। नहीं नहीं। नहीं पता ना। सी नहीं वी पता। इंटू पी डी वी प्लस वी डी पी इंटू सी वी इज इक्वल टू जीरो होता है। ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम डिवाइड करेंगे सी वी बी पी से। दोनों इक्वेशन सी वी और बी पी से डिवाइड कर देंगे। सो व्हाट विल गेट अस, इसको छोड़ो तुम मेयर को। फाइनली व्हाट यू विल गेट इज दिस, व्हेन यू सॉल्व ऑल ऑफ दिस व्हाट यू गेट इज दिस, P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा, मतलब पी वी गामा इज इक्वल टू। अब गामा नहीं पता ना तुम्हें क्या होता है? गामा? नहीं पता नहीं होगा। तो। हाँ, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस से आता है यार, पढ़ वो तो हमने पढ़ी नहीं है। तो हर गैस की एक देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये सुना है वर्ड पहले किसी और में? पहली बार ही सुन रहा हूँ। डिग्री, ओके। लेट्स जस्ट गिव यू सम आइडिया कि व्हेन वी से डिग्री ऑफ फ्रीडम से क्या मतलब होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ गैस, कितनी डायमेंशंस में गैस का मॉलिक्यूल हिल सकता है बेसिकली, राइट? हर डायमेंशन में उसकी एक एनर्जी होती है, KT/2। तो अगर 5 डायमेंशन में हिल सकता है तो उसकी एनर्जी होती है 5 KT/2 एक मॉलिक्यूल की। के इज कॉल्ड एज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है ये डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो गामा जो है वो पता, उससे हमें पता चल जाता है गैस जो है क्या है, मतलब इज इट अ मोनोएटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस, ट्राइएटॉमिक गैस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर एक टॉपिक होता है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बेसिकली। तो ये जो गामा नजर आ रहा है ये डिपेंड करेगा बेसिकली इस फॉर्मूले में कि ये गैस डायटोमिक है ट्राइएटोमिक है, उसकी फिक्स्ड वैल्यूज होती हैं गामा की फॉर ऑल दीज टाइप्स ऑफ गैसेस। तो क्वेश्चन में लिखा होगा इट्स अ एडियाबैटिक प्रोसेस एंड इट इन्वॉल्व्स a triatomic gas. So immediately you will say, okay, it's a triatomic gas. Therefore, my degree of freedom gamma की वैल्यू मुझे एक इनडायरेक्ट तरीके से दी हुई है। देयर इज अ चार्ट अवेलेबल जनरली, डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक चार्ट होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस। जस्ट शो यू द चार्ट। सो व्हेनेवर यू हैव एडियाबैटिक प्रोसेस, बेसिकली हम बोलते हैं कि एनर्जी ऑफ द गैस इज डिवाइडेड इनटू ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम। जो वो इंटरनल एनर्जी होती है गैस की वो उसके पास 7 डिग्री है, ट्राई एटॉमिक गैस है तो वो अलग अलग डिग्रीज में हिल सकती है, अलग अलग डायमेंशंस में, XY Z XY। जैसे वो ऑर्बिटल नहीं पढ़ा था, ऑर्बिटल टाइप, समथिंग वेरी क्लोज, नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल बट समथिंग वेरी सिमिलर इन इमेजिनेशन। व्हेनेवर यू डू एडियाबैटिक इक्वेशंस, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट है, so you will have to also note the degree of freedom of a gas। हाँ, ये है, ये मिला, कुछ तो मिला है। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ गैस, the degree of uh, freedom of a diatomic gas like nitrogen is 5। Okay, so if you have a diatomic gas, diatomic gas, then the degree of freedom it has is 5। गामा नहीं निकाला अभी, सिर्फ डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात कर रहे हैं। मोनोएटॉमिक गैस, the degrees of freedom is 3।
एनसीईआरटी में है काइनेटिक थ्योरी के अंदर, ये चार्ट है शायद, मैं लेट मी जस्ट पेस्ट दिस चार्ट। मतलब a molecule can move in XYZ direction. It can also rotate. It can also vibrate. So it shows many dimensions of pressure of a gas, magnetic interpretation. लिख ही देते हैं यार एक काइनेटिक थ्योरी, एटॉमिक गैस। हाँ ये रहा, आगे। दिस विल हेल्प आई थिंक। पहला मिला ये जो गामा होता है ना, इट इज बेसिकली रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स ऑफ द गैस। लेट्स पुट इट दिस वे, दिस गामा, normally the rule is P1 V1 equal to P2 V2, right? But यस। adiabatic process में look at it. Gamma is the ratio of specific heat of, तो मोनोएटॉमिक की स्पेसिफिक गामा मोनोएटॉमिक में क्या लेना है, 5/3। मोनोएटॉमिक गैस में लेना है 5/3 फॉर्मूले में। धीरे धीरे याद हो जाते हैं सारे। डायटोमिक के केस में क्या लेना है, 3 है जो रेशियोज हैं, 7/5। वी विल नॉट गो इन डिटेल ऑफ दिस, बस गामा याद रखना है हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फिलहाल। तो गामा, व्हाट विल बी अ गामा फॉर अ डायटोमिक गैस, तो एनसीईआरटी में है। 7/5 लेंगे, जो ये P1 V1 गामा लिखा हुआ है। इट डिपेंड्स ऑन, गामा इज रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट्स। पॉलीएटॉमिक गैस के लिए अगर इफ यू हैव टू फाइंड इट, क्या लिखा है यार, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पॉलीएटॉमिक गैस। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है एफ डालना है, और CP/CV है बेसिकली है। दिस गामा विच इज कमिंग हियर is CP/CV. So this is for monoatomic, this is for diatomic, and this is for polyatomic, where F is the, इन दोनों को डिवाइड करना है, 4+F/into R divided by 3+F into R. We are studying adiabatic process, and within adiabatic process, we reached a derivation called as PV gamma is equal to constant. Gamma, we did not understand what it is, but gamma is ratio of specific heat of that gas, CP/CV. It has something to do with degrees of freedom, and the ratio has to be memorized right now. जब हम पहुंचेंगे इस चैप्टर के ऊपर, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हम कर क्या रहे हैं। अभी हम इसमें ना अपना टाइम नहीं वेस्ट करते कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है, इसका इसका मतलब यही होता है कि जो आपकी जो इंटरनल एनर्जी है, वो कितनी डिमेंशंस में या डायरेक्शंस में वो है एक्सप्रेस्ड है। जिसके पास 5 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, उसकी एनर्जी 5 हिस्सों में बटी हुई है। और जो मेयर्स रिलेशनशिप में बोल रहा था, बेसिकली इट वाज CP-CV की जो हमारी डेरिवेशन आई थी, CP-CV इज इक्वल टू R। दिस इज द मेयर्स इक्वेशन आई वाज रेफरिंग टू। CP-CV इज इक्वल टू R, ये डेरिवेशन भी आती है स्कूल के पेपर में, डिराइव दिस एक्सप्रेशन। हाँ ठीक है। सो दिस गामा which we were studying is called as adiabatic constant। adiabatic constant जो अब निकला है हमारा, P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा फॉर एन adiabatic
प्रोसेस, और इसके अंदर हमारा गामा जो होता है, इट इज बेसिकली written as Cp by Cv. For a monoatomic gas, always use gamma to be 5 by 3. For a diatomic gas, use it to be 7 by 5. If you have a non-linear polyatomic gas, non-linear polyatomic gas, gamma is equal to 1 plus 2 by F given by 1 plus 2 by 6 is equal to 4 by 3. You don't need to worry, you need just memorize these two. Gamma for monatomic gas is 5 by 3. Gamma for diatomic gas is 7 by 5. It's known as adiabatic constant. तो हम ये डेरिवेशन अभी तुम्हारे स्कूल में करवाई है, तो मैं डेरिवेशन ही वाली, नो ना। कि बहुत सारे पेपर्स में ये एडियाबैटिक की डेरिवेशन याद करने को आती है, ये वाली। ये पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना होता है, फिर ये वाली इक्वेशन लगानी होती है, फिर डेरिवेटिव लेना होता है, फिर जो सीवी होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ ये मेयर इक्वेशन। सीपी बिकम्स इक्वल टू सीवी प्लस आर। ये आंसर में जो है सॉल्व करते करते रीच रीच है P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। एक ये याद करना है, P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। गामा इज कॉल्ड एडियाबेटिक कांस्टेंट। ठीक है, लेट्स अज्यूम कि तुम्हारे स्कूल में भी डेरिवेशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड आएगी नहीं। ठीक है। नथिंग ग्रेट अबाउट इट। In this derivation, some calculus is there, and two equations are to be manipulated, one with the help of calculus, the other is standard rule. So adiabatic process के अंदर the first thing, अभी we are not worried about work done. Now we are grappling with something else in an adiabatic process. We are just seeing PV का क्या relationship आता है। तो एक relationship PV का ये याद रखना है, एक याद रखना है ये वाला। तो इसको पहला इक्वेशन हमारा जो रिलेशनशिप है, PV गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। एक आपको ये याद रखना है, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो अभी हमने डिराइव करा लेकिन छोड़ दिया। यही है मतलब P1 V1 गामा इज इक्वल टू P2 V2 गामा। ओके, सो फॉर इफ यू ड्रॉ ग्राफ ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, राइट, P versus V, you have to follow this. We'll come to that. If you want to find the relationship between temperature and volume in an adiabatic process, it is T V gamma minus 1 is equal to constant, which means T1 V1 gamma minus 1 is equal to T2 V2 gamma minus 1. This is temperature and volume. Then you have also need to memorize temperature and pressure. And it is T1 gamma, sorry, T1 gamma, T1 gamma T1 gamma P1 1 minus gamma is equal to T2 gamma P2 1 minus gamma. So जब भी आप एडियाबैटिक के क्वेश्चन करते हो, तो नॉट ओनली हैव टू स्ट्रगल विद द वर्क डन, Q इक्वल टू जीरो है ऑब्वियसली, दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द पॉइंट कि एडियाबैटिक मींस Q इज इक्वल टू जीरो। ये हमने Q जीरो लिया था। तो पहले तो आपको ये याद करने हैं तीन, एक, दो और तीन। प्रेशर, वॉल्यूम, टीवी और टीपी, ये तीन ही अलग अलग होते हैं बड़े। They are not, they are dependent on something called as an adiabatic constant, which is ratio of Cp by Cv.
and is different for different type of gas, monoatomic, diatomic and all that. तो अभी तो वर्क डन वगैरह पे नहीं पहुंचे हम, सिर्फ पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, टी टीवी गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, टी गामा P1 minus gamma is equal to constant. मतलब if you have a graph where you are drawing PV graph appears very similar to the graph of the isothermal process. This is a PV. If you consider a point here where it is P1, sorry, V1 P1, and here it is V2 P2, and here it is V3 P3, then you will say P1 V1 gamma is equal to P2 V2 gamma is equal to P3 V3 gamma. The variables are linked like this. Any point on the curve follows this rule. Like xy raised to power 5/3 is equal to constant is some graph, right? Any coordinates will follow this and they will be equal in, because their equal product is equal to constant. The product of x and y raised to power 5/3. Equivalent of adiabatic constant for a monoatomic gas. So I said the graph looks very similar to the isothermal process. Looks very similar, but it is actually there is a slight difference that the slope is higher here, right? तो isothermal बनेगा तो ऐसे बनेगा, वो सिर्फ होता है PV is equal to constant. ये भाई है PV gamma is equal to constant. So this is isothermal, this is adiabatic. And if you see the slope wise also, हमने उसमें भी slope निकाली थी PV is equal to constant में dp by dv निकाला था. If you write this PV gamma is equal to constant for a adiabatic process and you take a derivative of this, so you have dp by dv is equal to gamma नीचे ले आओ, right? क्योंकि you're doing with respect to gamma, so gamma and PV gamma -1 divided by gamma ले आए ना हम यहाँ पे, PV gamma is equal to constant, sorry. So P is equal to constant upon V raised to power minus gamma. So P is equal to constant into V raised to power gamma. मैं नीचे ले गया था, सॉरी, ये ऊपर आके माइनस गामा होगा, प्लस हो गया. Now dp by dv is equal to some constant minus gamma V raised to power minus gamma -1 divided by, I'm taking derivative ना, minus gamma, ठीक लिया तो आ गया. So minus gamma raised to power V gamma plus 1. तो इसमें जो स्लोप होती है जो हमने निकाल ली dp by dv एज कंपेयर टू दिस सिचुएशन, इसमें जब डेरिवेटिव लिया था तो p इज इक्वल टू -1/v था, सॉरी, कांस्टेंट अपॉन v. सो dp by dv वाज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट अपॉन v स्क्वायर. यहाँ पे कुछ और आ रहा है, गामा अपॉन v रेज टू पावर गामा. सो द स्लोप ऑफ दिस कर्व, ये हमने डेरिवेटिव सही लिया है यार, एक बार ध्यान से देखें जरा. अगर ये डेरिवेटिव आया है dp p is equal to this v raised to power gamma and pv gamma is equal to constant, तो इसमें मैं अगर v raised to power gamma की वैल्यू constant अपॉन p डाल दूं तो आई विल गेट अ माइनस गामा अपॉन v, एंड v गामा एक v गामा है, v गामा को मैं डाल सकता हूँ कांस्टेंट अपॉन p, तो माइनस गामा टाइम्स p बाय p v. तो ये देखो स्लोप इसकी गामा टाइम्स p बाय v आती है. pv के अंदर जो स्लोप आती है दैट वाज p बाय v, अभी हमने निकाला था आइसोथर्मल में. आइसोथर्मल की जो स्लोप आई है गामा टाइम्स आई है उससे. सो अगर इफ यू सी टू टू प्रोसेसेस, राइट, where they say identify which one is isothermal and which one is this. Remember here PV1 is equal to constant is an isothermal process where P is proportional to 1/V. But in a adiabatic process V जो है 5/3 टाइप्स होता है, 7/5 वगैरह. तो faster, a small change in V results in faster decline of P. So the slope of an isothermal process will always be higher as compared to the slope of the adiabatic process. So if you draw, for example, here, can you say I'm drawing a slope here? ये slope है.
और यू ड्रॉ स्लोप हेयर, राइट, एंड दिस इज अ स्लोप, अभी तो बाई चांस बराबर हो गई है, बट सपोजिंगली दिस वुड हैव बीन मोर मोर लाइक दिस, और ये वाली स्लोप ऐसे आती है, ये स्लोप हाई है, ज्यादा स्लोप है ये स्लांट पे, तो इसका जो वो है, ये स्लोप एक है और दूसरी स्लोप ये हायर है, सो यू विल से दैट दिस प्रोसेस इज द वन विद द हायर स्लोप इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। समझ में आ रहा है, ऊपर से जा रहा है कुछ, नहीं नहीं, या मीडियम है? मीडियम मीडियम। मीडियम है, ओके। आई विल जस्ट स्टॉप हियर, टेक अ पॉज, टेल मी व्हाट पॉइंट यू वांट मी टू रिपीट। थोड़ा सा ओवरवेलमिंग है, मैं जल्दी भी करा रहा हूँ क्योंकि वो तुम्हारे स्कूल का पेपर है। नेक्स्ट टाइम वी विल डू न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, थोड़ी आदत हो जाएगी टर्मिनोलॉजी की, अभी बहुत ज्यादा एडियाबैटिक, कांस्टेंट, डिग्री फ्रीडम, फलाना ढिकाना, बहुत कुछ दिमाग में तुम्हारे डाल दिया मैंने। ये तीन इक्वेशंस याद रखनी है, अभी वर्क डन नहीं आया, और आइसोथर्मल से कंपैरिजन कर लिया विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस, ये दिखाया कि एज कंपेयर टू आइसोथर्मल एडियाबैटिक की स्लोप ज्यादा होती है और गामा टाइम्स ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में डीपी बाई डीवी केम आउट टू बी माइनस पी बाई वी, और dp by dv, the rate of change of pressure with respect to volume, which is a slope of p by v, in the case of a adiabatic process is minus gamma into p by v. Can digest this, take your time, पढ़ो इसको ध्यान से, कुछ पूछना है तो देखो, finding it too fast I know. एक्स्ट्रा लेयर जो है एडियाबैटिक में वो ये वाली है, these these equations, so they complicate because now pv is equal to nrt doesn't hold actually, it results in something else adiabatic में in terms of gamma, वहां तो हो जाता था ना T1 V1 इज इक्वल टू T2 V2 फलाना ढिकाना, आइसो बारेक आइसो कोरेक, ये थोड़ा सा एडियाबैटिक प्रोसेस में तीन एक्स्ट्रा इक्वेशंस हैं, और कंपैरिजन में आइसोथर्मल में स्लोप को यूज करा जाता है, कैलकुलस को, ठीक है। इसका डेरिवेटिव लेते हैं, जबकि अच्छा अच्छा, आइसोथर्मल के अंदर पीवी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का ये समझ तो डेरिवेटिव आ लेते गया, हैं। डेरिवेशन ठीक। अनलेस यू राइट इट डाउन विद योर ओन हैंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ कमांड ओवर इट। जब इसका डेरिवेटिव लिया था तो आंसर आया था माइनस पी बाई वी, डीपी बाई डीवी, और जब इसका डेरिवेटिव लिया है, विच इज अगेन नॉट योर फोटे बिकॉज यू हैव नॉट डन डेरिवेटिव एट दैट लेवल, बट इतना मुश्किल भी नहीं है, इसका डेरिवेटिव ठीक। जो आ रहा है डीपी बाई डीवी, इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस गामा इंटू पी बाई वी, सो गामा टाइम्स आ रहा है, स्लोप इज मोर। इफ यू फाइंड टू प्रोसेसेस लाइक दिस, वन इज दिस and the other is this, you want to find the slope here, so slope here is this, slope here for example is this, this is more slippery slope, adiabatic कहलाएगा, slope is higher, both appear to be rectangular hyperbolas actually, but if you use your common sense, I give you an equation where I say p is equal to constant upon v, and I say p is equal to constant upon v cube, ठीक है, for a small change in v from here to here, where will the pressure, तो v increases slightly, थोड़ा सा बढ़ जाता है, यहाँ v1 है ये v2 हो जाता है, प्रेशर किस में ज्यादा बदलेगा? V1। में बढ़ेगा यार, ये क्यूबिक है, हाँ। दिस इज क्यूबिक, हम्म। तो इसकी स्लोप ज्यादा होगी ना, ये फास्टर रेट पे बदलता है, फॉर अ गिवन डीवी dp is more for this. ओके, चेंज इन प्रेशर इज मोर। हाँ, if I say x displacement is 1 by t and displacement is 1 upon t cube, कोई है ऐसा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, फॉर अ स्मॉल चेंज इन t, where will the velocity will be higher, किसकी velocity हायर होगी? सर टी स्लोप, क्यूब। हाँ इसकी हायर होगी एट दैट इंस्टेंट, ये आएगा dx by dt इज इक्वल टू माइनस वन बाई टी स्क्वायर,
ये हम्म। आएगा dx by dt is equal to -3/t4. If you put, yes, if you compare t is equal to 2 seconds, this will be -1/4. And if you this compare one. it with 3 raised to power 16, हम्म। this is नेगेटिव साइन है, -0.25, ये नेगेटिव है, जीरो की तरफ है, ये ग्रेटर है। हम्म, समझ आ गई है। आइसोथर्मल और एडियाबैटिक का कंपैरिजन भी होता है, ठीक है। बिकॉज द ग्राफ्स लुक वेरी सिमिलर। आई विल नॉट प्रोसीड एनी फर्दर, आई थिंक दिस इज मोर देन इनफ फॉर यू टुडे। अब बहुत है, हाँ, इतना काफी है कि अब एडियाबैटिक की जो वर्क डन है वो हमें डिराइव करना है। कितना और बचा अभी? अभी चलेगा यार, दिस इज नॉट KG1 जहाँ पे 1 1.5 घंटे की क्लास में थर्मोडायनेमिक्स खत्म हो जाए। ये 11th स्टैंडर्ड की फिजिक्स है। केजी वन में भी नहीं खत्म होता साइंस का एक चैप्टर 1.5 घंटे में। तो आपको इसके ऊपर हैंडल बनाना है, प्रैक्टिस करनी है। तो मतलब तो एडियाबैटिक सीख लो, उसके बाद ये जितने भी हमने टॉपिक पढ़े हैं उस पर आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा मैं। लेट मी कंपेयर दिस विद, हमने इंटरनल एनर्जी वगैरह पढ़ ली है, स्पेसिफिक हीट्स पढ़ ली हैं। आई विल जस्ट सी एनसीईआरटी में और कितने नए टॉपिक हैं या नहीं है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रुशियल चैप्टर्स फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और इसमें ना कभी बात नहीं आती, बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं होती इसके अंदर। जो सीख लिया अभी सीख लिया। शाबाश, सबसे बढ़िया काम करा है इन्होंने। क्या? ओके, सो टॉपिक्स आर, वी हैव टू डू कार्नट इंजन। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ठीक। अभी हम कर रहे हैं, इसके बाद 3 टॉपिक हो रहे हैं। पहले तो अभी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस पे यू हैव टू get a good command how to do work done, etc., etc. Then we have to learn हम्म, second law of thermodynamics, and once we are clear on second law of thermodynamics we will do Carnot engine. So we have work 2 more topics: second law of thermodynamics and Carnot engine। ठीक। करना पड़ेगा। तो कल मिलते हैं और लेट्स कंटिन्यू द डिस्कशन इस पे जो आज हमने सीखा। आइसोथर्मल क्या होता है, आइसोकोरिक में क्या होता है, इसके न्यूमेरिकल करेंगे। 2 3 4 न्यूमेरिकल में पकड़ लोगे कि इतना मुश्किल नहीं है। सिर्फ फॉर्म क्योंकि ठीक। याद नहीं है ना अभी कुछ, ऑफ हैंड हम्म। याद नहीं है तो इसलिए लग रहा है मुश्किल है। वैसे मुश्किल नहीं है, देर एग्जाम्पल दिख जाएगा करते ही। आई ठीक वॉन्ट डू है। टू मैनी, आई विल जस्ट डू 2 फॉर एडियाबैटिक, 2 फॉर आइसोथर्मल।